हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में चैट जीपीटी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो चैट जीपीटी के बारे में इसीलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि एक नया साइबर सिक्योरिटी अलर्ट आया है, जिसमें थर्ड पार्टी प्लगइन के दौरान चैट जीपीटी का अकाउंट टेक ओवर हो रहा है। तो इसीलिए हमें मोर प्रिकॉशन लेना है, इसीलिए हमें मोर एडवांस लेना है। हमारा फ्यूचरिस्टिकल डेवलपमेंट जो भी है हम कर रहे हैं, उसका साइड इफेक्ट्स क्या क्या है हम वो भूल रहे हैं। तो इसीलिए हमें सेफगार्ड करना है हमारा सेंसिटिव डाटा को। सो दैट्स द मेन इंटेंशन ऑफ आवर टॉपिक, एंड विल बी हैविंग a certain discussion regarding what actually ChatGPT account security is all about. So what we'll be discussing everything in detail. Okay, so if you are new to this channel, please do a subscription to this channel, like the channel, share the channel as soon as possible for getting the latest update regarding any cyber attack. So here it is, इसमें क्या एक्चुअली है कि यूजर्स ऑफ चैट जीपीटी एंड सिमिलर प्लेटफॉर्म जो कि ओपन एआई यूज करके स्टूडेंट्स हो या फिर प्रोफेशनल कैरियर में जो भी अब आगे बढ़ना चाहता है, तो फिर डेफिनेटली चैट जीपीटी का यूटिलाइजेशन किसी ना किसी मूवमेंट में या फिर किसी ना किसी टाइम में यूज करता ही है, whether in the form of writing a mail or whether in the form of dumping the code or whether in the form of getting some recommendations or whether in the form of getting the recommendation steps or investigation steps। ठीक है, तो हर एक चीज का एक सर्टेन प्रोसेस के लिए हम चैट जीपीटी का यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो अगर यूटिलाइजेशन करते हैं तो फिर कैसे एक्चुअली होता है? फर्स्ट यू हैव टू लॉग इन टू दैट पोर्टल, राइट? सो ओपन एआई को अगर एक्सेस करना है तो फिर हम क्या करते हैं, हमारा लॉगिन देकर, ठीक है, लॉगिन देकर एक्चुअली एक्सेस करते हैं, राइट? सो वेन एवर यू आर लॉगिंग इन टू सेट इन पोर्टल, यू हैव टू बी मोर कंसर्न दैट योर डाटा इज विथ द things, or which you can say your data is with the uh, data is in backend, right? Which can be interrupted or which can be hampered if it is taken care or if it is being hampered by a third party plugin। ठीक है, अगर ये थर्ड पार्टी प्लगइन टेक ओवर करेगा तो फिर क्या क्या विजिलेंट या फिर क्या क्या एक्शंस वो लेगा वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इफ यू वांट टू गेट मोर अपडेट, सो प्लीज डू ए सब्सक्रिप्शन टू दिस चैनल। तो अंडरस्टैंडिंग द रिस्क, सो व्हाट आर द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रिस्क। ठीक है, हमें क्या क्या एक्चुअली रिस्क लेवल क्या क्या इसमें है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहला है कि वल्नरेबिलिटीज, उसके बाद है अकाउंट एक्सपोजर, तीसरा है ट्रस्ट इश्यूज। वल्नरेबिलिटीज यूजुअली जो कि थर्ड पार्टी प्लगइन्स है मैं इंट्रोड्यूस एक्सप्लॉइट एंड पॉइंट्स लीडिंग टू अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, वल्नरेबिलिटी जो कि है थर्ड पार्टी प्लगइन से आता है। अकाउंट एक्सपोजर, सिक्योरिटी ब्रीचेस can result in private messages, data and account credential been compromised। ठीक है, ओके, अकाउंट बेस्ड जो कि लॉगिन करते हैं हमारा अकाउंट से। उसके बाद ट्रस्ट इश्यूज, सो यूजर ट्रस्ट इन द प्लेटफॉर्म डिमिसेस। ठीक है, चैट जीपीटी के ऊपर जो भी भरोसा है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा व्हेन द सिक्योरिटी इश्यूज सर्टेन इश्यूज अराइजेस impacting with user attention or retention, you can say, right? So this is all about the vulnerabilities, account exposure and trust issues, which basically coming with the understanding of risk level. Basically we actually have that, right? So we will be having a certain discussion on this, and I hope it will be definitely enjoying the session. So let us proceed that. So जो कि अभी अभी हुआ है कि cyber security researcher have found that third party plugins, ठीक है, थर्ड पार्टी प्लगइन्स जो कि है अवेलेबल फॉर ओपन एआई चैट जीपीटी वुड एक्ट एज ए न्यू, क्या है, एक्ट एज ए न्यू अटैक सरफेस फॉर थ्रेट एक्टर। ओके, फॉर थ्रेट एक्टर टू what to look and to gain unauthorized access to sensitive data। ठीक है, तो with the help of our third party plugins। so according to second point में दिया गया है कि जो कि रिसर्चर है साल्ट लैब्स, तो साल्ट लैब्स क्या फाउंड किए हैं कि चैट जीपीटी विद इन द इकोसिस्टम, ठीक है, अपना इकोसिस्टम में ही अलाउ करेगा अटैकर्स को इंस्टॉल करने में मलिशियस प्लगइन। ठीक है, अपना यूजर्स का अपना मतलब क्या है, इंटरफेरेंस ना होकर भी, अपना योगदान ना देकर भी प्लगइन्स ऑटोमेटिकली, मलिशियस प्लगइन्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करने लगेगा। ठीक है, अपना चैट जीपीटी इकोसिस्टम में किस तरह, अकाउंट हाईजैकिंग की तरह ऑन थर्ड पार्टी वेबसाइट लाइक गिटहब थ्रू, वी कैन से, राइट? सो देन आफ्टर थर्ड पॉइंट में दिया गया कि चैट जीपीटी प्लगइन्स एज द नेम इंप्लाइज आर टूल्स, ठीक है,
प्लगइन्स बोलता हूँ, लेकिन वो क्या है एक्चुअली? तो चैट जीपीटी प्लगइन्स क्या है? द नेम implies a tools designed to run on a top of large language module, ठीक है, और हम बोलते हैं उसको LLM, which basically aims for assessing up data information, running computation and assess third party services, ठीक है। तो अगर हम किसी भी वेबसाइट्स में अगर डालना चाहते हैं, वो एक्चुअली क्या करता है, कुकीज को अलाउ करता है, थर्ड पार्टीज को अलाउ करता है, राइट? सो इन द सिमिलर फैशन यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो ऑफ व्हाट एक्चुअली चैट जीपीटी इज यूजिंग, और हाउ एक्चुअली द एक्टर थ्रेट एक्टर इज यूजिंग टू टेक द हैंडओवर ऑफ देयर अकाउंट्स फॉर चैट जीपीटी, ठीक है। सो ओपन एआई हैज सीन्स इंट्रोड्यूस्ड जीपीटी which are bespoke version of chat gpt tailored for specific use cases while reducing the third party service dependency as of March 19, 2024. So chat gpt users will no longer be able to install new plugins or create new conversation with existing plugins, ठीक है। उसके बाद one of the flaws unearthed by salt labs involves exploiting the earth workflow to trick a user into installing an arbitrary plugin by taking advantage of fact that ChatGPT doesn't validate that the user instead of, or you can say indeed, starting the plugin installation. So this effectively would allow the threat actor to interrupt the exfiltrated all data said by the victim, which may contain property, or we can say proprietary information, right? So this will definitely help us to get an knowledge of how actually the chat gpt plugins, or you can say earth o0 earth office earth workflow tricks the user to install the arbitrary plugins by taking advantage of fact chat gpt which does not validate the user indeed start the plugin installation, ठीक है। अपना इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिकली करने लगता है विदाउट द यूजर इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है कि द थ्रेट एक्टर interrupts and exfiltrate all the data, ठीक है, shared by the victims which may contain certain information, और जो कि बहुत ही बड़ा मतलब क्रूशियल इंफॉर्मेशन भी मान सकते हैं, ठीक है। आपको मतलब एक पिक्चरल डिस्क्रिप्शन दिया है कि डैन है, ठीक है, हाई प्लीज रीड द लास्ट प्लग इन रिक्वेस्ट, और यू कैन से पुल रिक्वेस्ट फ्रॉम गिटहब अकाउंट एंड इंसर्ट इनटू माय नोशन अकाउंट, ठीक है, चैट जीपीटी जो कि नोशन अकाउंट है, ठीक है। तो जो कि प्लगइन्स क्या करता है, डैंस गिटहब अकाउंट से सेंसिटिव डाटा को प्लगइन की तरह लेता है और जो कि नोशन प्लगइन में डंप कर देता है, ठीक है। So in this is the exact scenario how actually the chat gpt has been uh, becoming a bait of these threat actor through account hijacking method through third party plugins, ठीक है। प्रोटेक्टिंग योर अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह हमें कैसे इंसिडेंट रिस्पांस कैसे प्लान करना है, पहला है स्ट्रांग पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है, क्रिएट कॉम्प्लेक्स यूनिक पासवर्ड, ठीक है, considering the two-factor authentication for adding the security layer, plugin review जैसे कि रेगुलर रिव्यू एंड रिमूव अननेसेसरी और अनट्रस्टेड थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस हो गया। इंसिडेंट रिस्पांस में क्या हम ले सकते हैं कि हैव ए क्लियर स्ट्रैटेजी for handling the security incidents to mitigate potential damage, ठीक है। ये सब हो गया प्रोटेक्टिंग आवर अकाउंट्स में। उसके बाद होता है कि क्या क्या हम ले सकते हैं नेक्स्ट विजिबिलिटी में, जो कि चैट जीपीटी एक मतलब एक बेट बन चुका है, ठीक है। इसमें दिया गया है कि द साइबर सिक्योरिटी फ्रेम आल्सो अनएथर्न इश्यूज विद प्लगइन लैब्स, ठीक है, प्लगइन लैब्स को भी मतलब कांटेक्ट करके अनएथर्न किया गया कि एग्जैक्ट रूट कॉज क्या है, because weaponized by threat actor would conduct zero click account takeover attack, ठीक है। तो we will be having a discussion on this in separate session about that. So allowing them to gain control of organizations account or third party websites like githubs or accessing their source code repository, ये सब कुछ large language module में actually आता है। So also discovered in several plugins like including Killam AI and Earth redirection manipulation bugs, okay, that would permit the attacker to steal the account credential associated with the plugin itself by sending a specially crafted link to the victims, ठीक है। इसमें इवन फिशिंग मेल भी शामिल होता है कि एक सर्टेन लिंक्स भेजकर उसको क्लिक करने का, वन क्लिक booming the booming the booming the everything or booming the accounts, right? So the development comes weeks after the impaired details to cross-site scripting or the accesses vulnerability in ChatGPT that would change to seize the control of any account, ठीक है। दिसंबर 2020
2003 में एक्चुअली हुआ कि सिक्योरिटी रिसर्चर जॉन रिबन डेमोन्स्ट्रेट हाउ malicious actor would create a custom GPT that can fish for user credential and transmit the stolen data to an external server. ठीक है, ये सब हम एक एक्शन आइटम की तरह ले सकते हैं, ठीक है, such that we will be having understanding regarding what actually the things have been happening in our back end. It will definitely helps us to gain then access or gain and knowledge about the things which are basically been happening in our back end, right? So whenever a threat actor is going to compromise our accounts, we have to be more precious, we have to be more concerned about the about our security, about the layers of protection which basically we have in our accounts. It will have a great impact in the threat actors visibility in the accounts itself. But when we protect our accounts with a two factor authentication, or it may be from or it may be some malicious actor involvement with the third party applications, or we can say or we can even say chat gpt itself. Okay, तो ये हम सब कुछ एक कंसर्न भी ले सकते हैं, राइट? सो इट विल डेफिनेटली हेल्प अस टू गेन दैट कंप्लायंस एंड रेगुलेशन. डेफिनेटली कंप्लायंस एंड रेगुलेशन आर मोस्ट टू फैक्टर्स हम बोल सकते हैं. एक है जीडीपीआर, दूसरा है HIPAA. तो GDPR एक्चुअली क्या करता है कि जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन फॉर यूजर डाटा प्राइवेसी, और हिपा जो कि है अबाइड हेल्थ इंश्योरेंस प्रॉफिटेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर हेल्थ केयर डाटा सिक्योरिटी. ओके, सो ये हम हिपा एंड GDPR भी हम कंप्लायंस एंड रेगुलेशन के हिसाब से ले सकते हैं. सो न्यू रिमोट की लॉगिंग अटैक ऑन AI असिस्टेंट्स. ये क्या है एक्चुअली? तो AI असिस्टेंस के दौरान या फिर जो कि AI बूमिंग कर रहा है, तो उसके हिसाब से या फिर उसके हेल्प लेकर की रिमोट और की लॉगिंग अटैक्स करने लगते हैं, और through LLM, right? So the finding also follow new research published this week about LLM side channel attack that basically employs token length as a convert mean to extract encrypted response from AI assistants on the web. ठीक है, LLM generates and sends the response to a series of tokens, ठीक है, which we can say हम HTTP और हम पढ़ाई करते हैं, राइट? सो हम जब भी एक वेबसाइट को या फिर विजिट करते हैं, राइट, दे एक्चुअली सेंड ए सर्टेन टोकन, राइट? सो उस टोकन को मिलाने पर ही हमको उस वेबसाइट में जाने के लिए इजाजत मिलती है, राइट? सो दैट्स हाउ एक्चुअली द अकाउंट सेशन इज बीन एस्टैब्लिश्ड, राइट? क्लाइंट एंड सर्वर एस्टैब्लिशमेंट एक्चुअली हैपेंस, राइट? सो इसमें एक्चुअली यही होता है कि विच विद द यूजर टोकन ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सर्वर to the user as it generate a group of academy from the Ben University Offensive AI Research Lab say. So while this process basically encrypt the subsequent token transmission expose and a new side channel which basically comes into the role. So despite the encryption, the size of the packets can be revealed and the length of the token, potentially allowing the attackers on the network to interfere the sensitive and confidentiality information shared by private AI assistance conversation. Okay, तो इस ये सब एक मैटर होता है जब हम डिस्कस एक्चुअली करते हैं ओपेंसिव एआई, डिफेंसिव एआई और एलएलएम का यूज करके कैसे एक्चुअली अटैक सिनेरियो establish करते हैं with the new AI assistants, with the help of new AI assistants. So yeah, this is the balancing security with the establishment or stability of performance, present complexity and challenge that basically requires our attention to be concluded, right? So this is how actually the exact scenario, ठीक है, एक exact scenario हमको पता चल गया कि कैसे encrypt करने लगते हैं attackers और कैसे वो decrypt करने लगते हैं, encrypt करके decrypt कर कैसे करने लगते हैं with the help of AI assistants. वही actually matter करता है when we actually discuss about the two key prerequisites to pull the attacker or at AI chart client running in streaming mode and the adversary a both matter करता है, right? So let me say you who is capable of capturing the network traffic between the client and the AI chatbot. ठीक है, तो एक्चुअली टोकन एस्टैब्लिशमेंट कैसे होता है वो सब एक क्लियर पिक्चर इसमें मिल जाएगा या फिर मिल जाता है, राइट? सो कंटिन्यूअस एजुकेशन, तो इस अटैक्स को कैसे हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं, रेमिडिएट कर सकते हैं? पहला है अवेयरनेस प्रोग्राम, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और फिशिंग प्रिवेंशन जो कि लिंक जो कि भेजते हैं, राइट? सो दीज आर द डिफरेंट
action plan which we can take in the form of continuous education. रिपोर्टिंग, और यू कैन से रिपोर्टिंग सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, पहला है कंटैक्ट डिटेल्स, जो कि है कौन सा अकाउंट एक्चुअली ऑथेंटिकेट हुआ है या फिर ऑथराइज्ड हुआ है या फिर कंप्रोमाइज हो गया। इंसिडेंट रिस्पांस प्लान या फिर रिस्पांस टीम को कैसे स्पेशलाइजेशन करना, उसको कैसे देना। उसके बाद इंसिडेंट एनालिसिस, पोस्ट कंडक्ट एक्टिविटी कैसे हम लेना है। ट्रांसपेरेंसी एंड कम्युनिकेशन में एक्चुअली होता है कम्युनिकेशन चैनल, डिस्क्लोज पॉलिसी एंड यूजर एंगेजमेंट्स, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट, कोलैबोरेशन एज वेल एज व्हाट knowledge sharing. So these were the different steps we can even say or even take. Okay, so I hope you have enjoyed the session, folks. So let me end the video itself. Thank you.